You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. हाइब्रिड कार है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से चलती है और बहुत ऑसम कार है ये, बहुत ऑसम कार है और या इट्स क्वाइट गुड. आई वुड सजेस्ट इफ यू विजिट यूरोप एंड इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर हैंड्स ऑन दिस यूरोपियन. पहाड़ों के बीच से गए थे और छोटे छोटे जो घर आते हैं वो ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड वाले, वो वाले घर भी दिखे थे. अच्छा लगा था कल शाम को. तो अगर आज भी मिलता है तो हम रुकेंगे कहीं पे, हॉल्ट करेंगे और लेते हैं वीडियो फिर उस जगह का आपको दिखाते हैं कैसा. फिलहाल मुझे इसको You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from. We are still in Germany. Yeah, so we are in the German land. See, you can see the view. It's amazing. Like if you have a driving license and you are willing to drive, if you are willing to take that pain of driving, I don't think so it's a pain for me, but for many people they think they get tired. छुट्टियों में क्या ड्राइव करना, but I think it's quite. इस तरफ अगर आप व्यू देखेंगे ना लेफ्ट साइड में, और सबसे अच्छा व्यू ड्राइवर को मिलता है क्योंकि वो सब कुछ देख पाता है. इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि if you are having a valid driving license and अगर आप इंडिया से चलाना चाहते हैं, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेके यूरोप में कैसे चला सकते हैं. लेकिन एक उसमें ट्विस्ट है, मैं एक बार और वीडियो बनाऊँ. ओके.
और मैं बात करूँगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब आप शेंगन कंट्रीज़ में एक से दूसरे कंट्री जाते हैं, स्पेशली जब मैं बात करूँ मैंने जो जर्मनी से हमने जो कार लेके जो ऑस्ट्रिया गए थे कल, तो एक रूल है कि आपको कोई भी गैस स्टेशन पे रुक के, पेट्रोल स्टेशन जिसको बोलते हैं, पेट्रोल पंप हिंदी में जिसको बोलते हैं इंडिया में, वहाँ रुक के आपको एक स्टिकर लेना होगा पर्टिकुलर कंट्री, किस कंट्री में आप एंटर कर रहे हैं अपने व्हीकल को लेके। मतलब जैसे कि हम ऑस्ट्रिया गए थे, तो गाड़ी जैसे ही रुकेगी मैं आपको विंडशील्ड पे मेरी लेफ्ट साइड में ऑस्ट्रिया की स्टिकर है। अच्छा, आज भी लेना होगा क्या स्टिकर? नहीं। कितने दिन तक वैलिड है ये? 10 days। 10 days के। तो जैसे आपने वीडियो में सुना कि हमें एक स्टिकर लेनी होती है हमें गैस स्टेशन से, ओके। और इसकी कोई कॉस्टिंग होती है? ओके। You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Up spontaneously. On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Something to remind us that we're better than this poor love song. ओके। तो जी, अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी यूरोप में कैसे गाड़ी चला सकते हैं, तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस। सिर्फ अप्लाई कर लेने से आप चला नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको मैनुअल गाड़ी भी मिल जाएगी इधर,
90% लोग मैनुअल गाड़ी चलाते हैं. ऑटोमेटिक अगर आप चलाते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है उतना. मैनुअल गाड़ी आप लेंगे, गुड, वेरी गुड, मिल जाएगा आपको. थोड़ा ज़्यादा ही सस्ता में मैनुअल यहाँ मिलता है, हमने ऐसे सुना है. वैसे हमारे पास तो ऑटोमेटिक है. लेकिन चैलेंजेस ये है कि अगर आपने यूरोप, यूएई, यूएस जैसी कंट्री में, कनाडा जैसी कंट्री में अगर ड्राइव नहीं किया है, अगर आपको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग के रूल्स नहीं मालूम है, क्योंकि इंडिया में स्पीड लिमिट. ओके. तो अगर आपने यूएस, यूएई, कनाडा या बाकी जो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कंट्रीज है, लंदन में राइट हैंड ड्राइविंग है, सेम लाइक इंडिया, सो एक्सेप्ट लंदन. अगर आपने कोई भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट या मिडिल ईस्ट में या यूएस में, कनाडा में ड्राइव नहीं किया है, वहाँ के अगर आप रेसिडेंट नहीं रहे कभी, तो आपको लेफ्ट हैंड ड्राइविंग नहीं आती होगी. हालांकि आपको राइट हैंड ड्राइविंग आती है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस लेके चलाने का कोशिश भी करते हैं इन कॉन्टिनेंट्स में, तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग के कुछ अलग रूल्स होते हैं. यहाँ प्रायोरिटी टू द व्हीकल किसको देना है, क्या देना है, ये सब आपको थोड़ा जानना पड़ेगा. उसके लिए आपको यूट्यूब या फिर यूट्यूब ही आज के डेट में आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से लेफ्ट लेंगे, कहाँ से राइट लेंगे. कि आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज़ है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि फाइन है, आप गलत नहीं कर सकते हैं. और इट्स गुड टू ड्राइव, बट यू शुड नो द रूल्स ऑफ ड्राइविंग लेफ्ट हैंड ड्राइविंग के रूल्स आपको पता होने चाहिए. क्योंकि यूएई, यूएस, कनाडा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हर जगह लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है. इसलिए अगर आप इन सब कंट्रीज़ में ड्राइव किए हैं कभी भी, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू ड्राइव हियर, बिकॉज आपको रूल्स मालूम है कि आपको लेफ्ट कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, राउंड अबाउट पे कैसे लेना है, एंड थिंग्स लाइक दैट. प्रायोरिटी आपको कौन सी व्हीकल को लेनी है. लेन ड्राइविंग, इंडिया में लेन ड्राइविंग की प्रायोरिटी नहीं है. नोबडी इज फॉलोइंग लेन ड्राइविंग, सो दैट इशू यू माइट फेस इफ यू हैव ओनली ड्रिवन इन इंडिया एंड यू आर प्लानिंग टू ड्राइव इन यूरोप. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप डायरेक्टली इंडियन लाइसेंस लेके यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करिए. यूट्यूब देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कहीं पे आपको करना पड़ेगा. थोड़ा फाइन वाइन लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको. हालांकि मैनुअल गाड़ी है, अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब देख लेंगे तो आपको इतना कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन इंडिया में आप चलाते हैं तो लेन ड्राइविंग की आपको आदत नहीं होगी, तो थोड़ा सा वो सब आपको प्रैक्टिस में अपने आप को लाना होगा. अदरवाइज इट्स वेरी नाइस, वेरी स्मूथ ड्राइविंग. तो यहाँ पे वो इंडिया की तरह नहीं है कि एक दूसरे को आगे से पीछे से कहीं से भी ओवरटेक कर रहे हैं, कोई रूल्स नहीं मान रहे. यहाँ पे हर कोई रूल से चलता है. इनफैक्ट यूएस, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह कहीं भी आप अगर ड्राइव करेंगे, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग जहाँ जहाँ है बहुत रूल्स है. तो इसलिए ड्राइविंग इज़ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस देयर. ओके, सो इसलिए हम क्यों चला पा रहे हैं यहाँ पे. मेरे पास इंडियन लाइसेंस नहीं है, मेरे पास यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि 50 कंट्रीज़ में वैलिड है. और 50 कंट्रीज़ बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें कि यूएस भी इंक्लूडेड है और यूरोप तो है ही इंक्लूडेड, लंदन इंक्लूडेड है, हर चीज़ है. लेकिन द थिंग इज़ कि मैं मैनुअल नहीं चला पाती हूँ और मैं ऑटोमेटिक चलाती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक ही चलता है मोस्टली कंट्रीज़ में. अभी भी मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है. तो ये रहा, अगर आप इंडियन लाइसेंस लेके चलाना चाहते हैं इन सब कंट्रीज़ में, तो आप आईटीएल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें. और सिर्फ अप्लाई ही ना करें, आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखें कि आपको पार्किंग कैसे लगाना है, लेफ्ट राइट कैसे लेना है. क्योंकि अनलाइक इन इंडिया नोबडी फॉलोज पार्किंग रूल्स. कोई भी कहीं भी कैसे भी पार्क कर देता है. दे डोंट रियली केयर कि पार्किंग में हम कैसे खड़े हैं, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी. बट इट्स डिफरेंट इन दिस कंट्रीज. यू हैव टू फॉलो द पार्किंग रूल्स. आप कैसे भी पार्क नहीं कर सकते हैं, आप कैसे भी गाड़ी नहीं रख सकते हैं, आप कैसे मर्जी भी गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं. यू हैव टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स व्हेन यू आर ऑन द रोड. सो वो सब आपको यूट्यूब देखनी पड़ेगी अगर आपने कोई भी ऐसी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कंट्रीज में नहीं चलाया है तो. अदरवाइज अगर आप वेल एंड गुड है, चलाइए, एक्सपीरियंस लीजिए. तो ये रही बात ड्राइविंग की. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us.
If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us.